On August 7, 2024, Bollywood's beloved icon Madhuri Dixit Nene captivated attendees at an exclusive press conference hosted by Atik Sheikh of World Star Entertainment. Held at the Marigold in Somerset, New Jersey, the event offered a rare and intimate opportunity for media representatives to engage with the forever queen of Bollywood. The event, moderated by Faridun Shahryar, was a resounding success, highlighting Madhuri's illustrious career and her continued influence in the entertainment industry. Hosted by Shalan Bhanot, Atik Sheikh of World Star Entertainment will bring Bollywood icon Madhuri Dixit Nene live in New York on August 8th, Dallas on August 9th, New Jersey on August 10th, and Atlanta on August 11th. This event promises an evening of dynamic performances and entertainment. Our big boss contestant, so obviously everyone knows very DMT. More of you have seen him in our Amisha show, so everybody please give him a very round of applause. Thank you. Mr. Atik Sheikh of World Star Entertainment. गाय थोड़ी तालियां ज़्यादा बज सकती है, अच्छे खासा क्राउड है, जल्दी क्राउड भी आया है. Now, the Madhuri Dixit ji. Anybody, can you please help me stand up? Anybody? The gorgeous, glamorous Madhuri Dixit. All right, we will start the evening. Very welcome, ma'am. Thank you so much. And I will have Faridun take it from here, and we will start. Good evening, everyone. I hope you're. Good evening, everyone. I hope you're having the time of your life. You should actually. You're not going to get this opportunity to be in the company of Madhuri ji. शादी मेरे भाई हैं तो मैं सिर्फ माधुरी जी को. माधुरी जी के साथ में कम से कम ऑलमोस्ट 10 मंथ से हम लोगों के प्रोसेस चल रहा है, बैक एंड फोर्थ. बट मैं जिद पकड़ के रखा था, आई वांट माधुरी, इज माधुरी हियर. सो थैंक गॉड एंड शी इज हियर. और इंशाल्लाह आप लोगों को कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा. थर्सडे के दिन जो कल मेरा शो है वहाँ पे न्यूयॉर्क में, और सैटरडे वी हैव जर्सी, and that's a different kind of meet and greet. Is meet and greet, but it's a different kind of. So we have a lot of element. We're not going to disclose here, but definitely you guys have to come and see that. But मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ माधुरी जी का कि she is here. Thank you. First of all, hi. How are you guys? Thank you so much for having us. Thank you so much. I see some old faces I met a couple of months back. I did my New Year over here, ma'am. Oh, okay. Thanks for 31st night I did here. कैसे हैं आप लोग? Very good. मैं बहुत nervous हूँ. Me too. Sitting next to Madhuri ji is like, I don't know, I can't believe it. मैं ना मेरी फैमिली बिलीव कर पा रही है कि मैं इनके साथ में बैठा हूँ, ना मैं बिलीव कर पा रहा हूँ. I hope and pray कि मैं थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर जाऊँ कल. So I'll be really really grateful. Answering your question, सीखता उससे है जिससे आप भगवान से सीख नहीं सकते. She is like God of this entertainment and that industry. I can't learn. The only thing I can do is pray and look up to her and just pray to God to have के 2% टैलेंट मुझे इनका मिल जाए तो मेरा करियर बन जाएगा. So I really hope and pray कि 4 दिन में कहीं उनका एक वो था ना, कहीं एक टकरा अगर कुछ मिल गया तो मैं अपने आप को बहुत शुक्रगुजार समझूंगा. थैंक यू सो मच मैम. थोड़ा ज़्यादा हो गया. मैं सच बता रहा हूँ. हाँ नहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ. पर मैं कहूँगी कि you know we are going to have lots of fun. जब हम मिलेंगे हमारे फैंस से, आप लोगों से मिलेंगे, we are going to have so much fun and don't even be nervous about that because you know it's something that comes out of place of love for them and we just got to make sure that they are entertained and they have the greatest time of their lives. Yeah, for sure. और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मेल्स हैं, ये देखो मैं इनके बगल में है ना, जलन होगी, होना चाहिए. ये भी बहुत ज़्यादा हो गया. नहीं लेकिन मुझे लगता है भाभी जी, मुझे लगता है कि आपको गॉड ऑफ लाइफ, लेकिन जितना मैं आपको जानता हूँ मुझे लगता है कि you've always been a student. And I personally feel that you would feel that you just started. जिस तरीके की एनर्जी और जिस तरीके की आप देख रहे हैं. Every day. रणबीर कपूर के बारे में बात कर रहे थे अभी आप. मुझे लगता है कि अभी तो टाइगर श्रॉफ हर कोई आपके साथ में काम करना है. अच्छा.
ये भी ज़्यादा हो रहा है अभी लेकिन ये कहूँगी कि यस आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट, और जब भी मैं सेट पे जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है आज मैं क्या सीखने वाली हूँ, आज मैं कुछ नया सीखने वाली हूँ. एवरी डे इन द मॉर्निंग गेट अप एंड आई फील आज कुछ नया सीखना चाहिए, एंड दैट नेवर गोज अवे. आई एम ऑलवेज क्यूरियस, आई एम ऑलवेज वंडरिंग कि क्या होने वाला है. सेट पे जब कोई भी रोल भी करती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि आज कुछ नया करके दिखाना है, या यू नो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू चैलेंज माई सेल्फ टू गेट बेटर, टू डू बेटर, एंड दैट्स like you said, I'm always a student. No, absolutely. And Madhu ji, अभी अगर आपसे like we have with you with us and इतनी सारी बातें हैं जो कि आपसे की जा सकती हैं, कि अगर एक ही बात मेरे जहन में आ रही है कि कपिल शर्मा का शो था, शाहरुख खान साहब से यश चोपड़ा साहब के बारे में बात हो रही थी, और उन्होंने बताया कि वो दिल तो पागल है का नरेशन था. यश चोपड़ा जी बहुत ही दिलचस्प अंदाज में नरेशन करते थे. So I think those memories must be truly. आपका क्या थॉट था जब आपको स्क्रिप्ट जब नरेट करी थी यश जी ने? नहीं, नरेट मुझे आदि ने की थी स्क्रिप्ट. जब हम सेट पे जाते थे जो यश जी आके इंस्ट्रक्शंस देते थे, तो उनका इंस्ट्रक्शन शॉर्ट हैंड में होता था. जैसे माधुरी तुम इधर से आओ, वो बेटा मतलब ऐसा कर लेंगे, मतलब देखो रोमांस एकदम ऐसे करके निकल जाते थे. मैंने बोला शाहरुख इन्होंने क्या कहा कि वो जस्ट से so just don't worry saying it should be very romantic. वो मुझे बताते थे कि क्या वो बोल के गए हैं, बिकॉज वो शॉर्ट हैंड में ही बात करते थे हमेशा यश जी. और उनके बारे में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, कभी जितना नेचुरल करो उतना उनको पसंद आता था, और कभी 2, 3, 4 टेक से ऊपर उन्होंने किए ही नहीं, क्योंकि जब उनको ऐसा लगता था हाँ ये मिल गया मुझे, he never used to try to कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं होता था. So that's why I used to always get surprised कि okay हो गया, अच्छा first take में okay हो गया, बोले हाँ he is happy with it, which means it's great. So लेकिन ये जो शाहरुख खान के साथ हुआ मेरा, वो मैंने जो उन्होंने एहसान किया मुझ पे, मैंने रिटर्न किया था जब हुसैन जी के साथ मूवी बनी थी गजगामी, और उसमें उन्होंने एक छोटा सा कैमियो किया था, और हुसैन जी आके उनको बोलते थे ऐसे yes we will just shoot, and ऐसे आप बोल देना या ऐसे करते थे, निकल जाते थे. शाहरुख मुझे पूछते थे ये क्या बोल के गए, what did he say, what is the instruction? I said Shahrukh just follow whatever he says, don't even worry about it. तो ऐसे you know it's always give and take, and he's a wonderful person to work with, absolutely. जी बिल्कुल. और हुसैन साहब की आपने बात करी, मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरी शायद दुनिया में शायद कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिसको इतने बड़े आर्टिस्ट ने इस तरीके से लिटरली पूजा और उनकी पेंटिंग्स बनाई थी, फिल्म भी साथ में बनाई. That was simply sensational. I think he has seen your films like hundreds of times. Certain films उन्होंने मतलब सैकड़ों बार देखी थी. जी, हम आपके हैं कौन है something he really loved. जी. और उन्होंने इतने सारे पेंटिंग्स भी बनाए, और he was such a lovely person. और मतलब इतने वो अपने आर्ट से जुड़े हुए थे कि डेनवर आए थे एक बार विजिट करने के लिए मुझे, और मैंने उनसे कहा कि आप कुछ मत कीजिए, डोंट पेंट, जस्ट सिट, जस्ट रिलैक्स, आप चाय पीजिए, यू नो, जस्ट हैव फन, जस्ट. बोले मुझे पनिश क्यों कर रही हो? मैंने बोला क्यों? बोला आई एम द मोस्ट रिलैक्स व्हेन आई पेंट. तो बोले चलो अभी वी आर गोइंग टू गेट सम कैनवस एंड आई एम गोइंग टू पेंट. तो मैंने कहा जब वो आए तो एक ही बैग लेके आए थे, छोटी सी ट्रॉली बैग. तो मैंने कहा अच्छा तो पेंट भी लाने पड़ेंगे. तो मैंने वो बोले नहीं ये क्या है पेंट्स. मैंने बोला आपके फिर कपड़े वपड़े कहाँ हैं आपके सब, आप सिर्फ पेंट ही लेके आए. बोले हाँ ये क्या पहना है मैंने, बस हो गया. So they said let's go shopping. I need to stand up because I feel like, you know, I'm a big fan of yours. Thank you. And, Thank you. welcome to New Jersey. I'm Pia from ITV Gold. Nice to meet you. Same here. You know, my question is very different from your movies, which definitely, you know, you have aced all of them. My question is about women empowerment, especially, you know, it's just a slogan, I feel, and a diversity thing, gold here. So, especially for ladies over here, what kind of message would you want to give them to make it real? Yeah, it's a very vast subject. Long. But Long. yeah, it's vast. But I would say that what is women empowerment? When you get to make your choice to do what you want to do, and you don't really have to depend on anybody else. That is women empowerment for me.
that you can get to choose what you want to do. But a lot of times, it's not possible for the woman. And how then do you go out and say that, you know, you have to do this? It's hard, it's hard. But through the characters I play or through the roles I play, I try to inspire people. I try to inspire the women. Like there was a film I did called Mrityudand. Of course. It's set in a very feudal, kind of, she gets married into this feudal family. She comes from a well-educated family where she was treated differently. She was treated as an independent person, you know, not a woman or not a man. She was her own person. And when she comes into this feudal family, she realizes that the treatment of women is different in this house. And how she rises up, and how she defends her rights, and how, of course, in the end, she kills the villain. I don't say you should do that, but that's dramatization to the extreme. But everybody has to fight their own battles. And if I can do roles which can inspire people to do that, then I think I have done a little bit of the work. But it's so vast, it's so deep-rooted, and it's so... but I think from where women were to today, I'll tell you the difference. When I used to work before, the only women on the sets used to be me, my co-artist, who's a woman, or the hairdresser. That's it. No other women were on the set apart from that. Today, when I walk onto the sets, there are women in every department. You know, they're DOPs, ADs, directors, writers. Behind the scenes, there's this woman who's a set creator. So she's like, idhar se chal, udhar nik, you know, she's the boss there. She's asking everyone to do everything. So I feel so happy when I walk into the sets today that women they are everywhere, and they are burgeoning, they are coming forward, and they are improving, and I'm so happy about that. Also, ma'am, just to add a little, a Jeeta Jata example is this press conference. We have more female. Oh yeah, more look men, at that! So kudos to More women women, power. yeah, You know? absolutely. Bhaijan. You have a question? Well, I have with me here, that's Sharmila Captain, and she's one of the organizers for Madhuri Dixit show, and she will be organizing in Atlanta. So, Sharmila, tell me, like, what should people expect from your show? So Madhuri Dixit is coming for Atlanta. She's coming the first time. So people are really excited. We have a lineup of local shows for an hour, and this time the show is really different because Madhuri ma'am is performing on some of her movie dialogues and dances. So we have a whole team of kids and adults who are going to be performing with Madhuri ma'am. So we are really excited. Any messages you want to give out to the people? For the people of New Jersey and New York, New York is tomorrow, Saturday is New Jersey. Go out and get a glimpse of Queen of Bollywood. First time, we don't know when she's going to come back, and it's going to be an amazing show. Thank you so much, and wishing you all the best. Thank you. Thank you.